Hello everyone. A very warm welcome to today's webinar on career option and the future in computer science. So before going to start our webinar on our career, we are just aware of the career options. So as per here, we just go by the foundation in computer science and research. First, we are aware of the introduction part. Then we are aware of the foundation in computer science and research, career path in high level languages like software development, web development, data science and analytical, mobile app development, cyber security, artificial intelligence and cloud computing. And the future trend languages are machine learning, deep learning. Then we are just aware of future trends and opportunities. In the last 15 minutes, we are just go by a question and answer. So first, we are just go by the introduction, like the importance of computer science in modern society. So the first word is here, that is problem solving. So as we know, the problem solving is what it is a part of our algorithm. So computer science, or we can say when we develop our complex problem, usually for the computational thinking and arithmetic approach, we analyze a large data set or designing using the effective algorithm. So as an IT person, problem solving or algorithm is played a vital role in addressing the real world challenges across the various domains. Then the second is like computer science with the technological advancement. So we can drive technological advancement like enabling innovations such as artificial intelligence, machine learning, robotics, and data analysis. So these advancements like for the healthcare, finance, transportation, and entertainment. So leading to improve the efficiency, accuracy, and convenience in everyday life. So next one is our global connectivity. So global connectivity means internet. We are using our internet. So a project is a computer science. We connected people like World Wide Web, and internet is giving a proper facilitating communication, collaborations, and information sharing. So social media platform like online marketing or communication tools. So these tools have transformed how we interact with each other. So we are using our normal UPVAT or the normal concern about the global connectivity. Next, we are discussing here, the point is career opportunity. So career opportunities is taking
is offering the variety, diverse opportunity in software development, cybersecurity, or the data science, artificial intelligence, and much more. So, with the increasing demand for the IT talent, computer science graduate or the postgraduate have access to high-paying job and opportunity for the career advancement in dynamic and fast-growing industry. Then we are moving to our point, that is innovative and creativity. So, we can develop new technologies, new applications, and digital solutions from mobile app to the virtual reality experiences. And computer scientists or an IT person have the opportunity to push the boundaries of what reality or what possible and the shape of future technology. Next part is in our future enhancement for our career is impact on society. So we can say a computer science has a profound impact on society, the influencing everything from education to healthcare to politics to the entertainment. So we can say the ethics considerations such as data privacy, cyber security are increasingly important as technology become more integrated into our everyday life. So we're highlighting the need to responsible and ethical decision making in the field. Importance of computer science is the modern societies to gaining the proficiency in high level programming languages. Such kind of languages we are aware of like Python, Java, C++. So they all provide a powerful tool for software development or software developed application or the website development. So we are enhance our algorithm skills. Now, moving to the next, that is career path in high level languages. So as per the graduate for the BTech, BSCIT or BCA or masters like MCA or MTech, we specializing in high level languages. So first word in front of us, the first technology in front of us, that is software development. Software development is the process of designing, programming, testing, and maintaining software application or the system. And it involves creating computer programs that perform specific tasks. Software development, like a wide range of roles and specialties include the software engineer, programmers, quality assurance engineers, or we can say user experience like UX designer and project manager. And it plays a vital role in driving innovation and enabling our digital transformation among the IT industry. The next career option
here is the web development. Web development is having another career option in our career path. So web development plays again a very crucial or a vital role in creating dynamic and interactive websites like e-commerce platform, social networks, like content management system, we can say CMS. It's a web-based applications and other online services. So we can say we develop our client side or the server side, less secure or more secure website when we are selecting web development as a career path. So it enables our businesses, organizations, and individuals to establish an online presence, connect to their audience, or deliver value through digital channels. The next career option we are selecting here, that is data science and analyticals. So it means like knowledge from a large volume of data to inform our decision making or optimize processes and drive business outcomes. So it is a range of techniques and method for collecting, cleaning, analyzing, and visualizing. So data science and analyticals are interdisciplinary field that draw upon the concept of statistics, mathematics, computer science, and domains specific knowledge or trends and correlation in the data. So next career path we are selecting, that is our mobile app development. So mobile app development is the process of creating software application. Specifically, we can say we design to run on mobile devices such as smartphones and tablet. Mobile app development involves the designing, coding, testing, deploying applications. And mobile platform like iOS, we can say Apple operating system, or Android like Google operating system. These apps can serve a wide range of purposes, from entertainment or the social networking to productivity and e-commerce. And next career option here is, it's a cybersecurity. Cybersecurity is information security, and it is a practice of protecting computer system, networks, devices, and data from unauthorized access, cyber attacks, theft, and damage, or the other activities. So next one career option we are selecting here as a data analysis. So we can simply say the context of data analysis. We say like cleaning, transforming,
modeling data to discover useful information, draw conclusions, and support management or decision system. Data analysis involves, or we can say, we apply statistics and computational techniques to raw data set to extract meaningful insights, patterns. At the last, I definitely take the question answer session. So we are selecting our data analysis field here. So we can say data set is extracting the meaningful insight, patterns and trends. Next, the career option or the high-level language career option is machine learning, artificial of intelligence. So, machine learning is a subset of AI or the artificial intelligence that focuses on the development of algorithm. So machine learning says it is a subset of AI, or it can focus on the development of algorithm or the statistics model. It enables computer to learn from and make the predictions or decision based on the past historical data. So without being explicitly programmed for each task, we predict the decision, and that decision is based on our past history. Next career option is cloud computing. So cloud computing means the computing services or the computing system services. It includes our servers or the storage databases or networking, software and much more. So over to the internet, the cloud offers our faster innovation, flexible resources and economics of the skills. And one more career option is here, that is DevOps. DevOps is a contribution of development and operations. So it is a set of practices, mythology and cultural process to aim at improving our collaboration, फोन से ज्वाइन करके देखना पड़ेगा, अपने फोन से ज्वाइन कर लो और इसको म्यूट करो। लिंक आ रहा है आपके पास फोन में? So the next option is our DevOps. We are
highly focus on our cloud computing and DevOps. This is again our career option for the high level languages. So we know it is the contribution of development and operations. And it is a set of practice or the mythology and like culture for the improving our collaboration, communication and integrations. So integration between the software development or the software development team say dev and IT operation team says about like ops. So DevOps emphasizes automation, integration, let's say, or continuous integration like CI or the continuous delivery, let's say CD. So DevOps is again our career path for our AI. So various career options are here. Now, these are the foundations in computer science. Computer science is the field, is not start. It is started at the year of 1968 or 70s. So there are some core concepts are there. So basically in the core concepts, we are aware of the core concepts, let's say critical thinking, skills are there, programming proficiency or the specialized knowledge or like practical experiences, networking opportunities or adaptability in the life cycles, learning or lifelong learning is there. So these are some foundation processing computer science. So first thing we understand what is known as our core concept. So one word is here that is core concept. It's a strong foundation in computer science provided by the bachelor's or the master's. So for a successful career option, we are selecting our field of IT. So the first core concept is the concept as algorithm, like data structure, a computer architecture, or the term is known as operating system, software engineering, and the principle of software engineering process. So it's a solid gap of these fundamental forms and basis of solving complex problem, designing efficient system, and developing our high quality software solutions. Now, when we are moving to the critical thinking skills, means as a computer science program, we emphasize critical thinking and problem solving skills. So students learn how to analyze a problem, break down the problem into the smaller component or the smaller cluster and devise arithmetic solutions. So the analytical mindset is in the various career path within the tech industry or
where individuals are constantly focused with new challenges and opportunities for new innovations. Now, the next is like programming proficiency. Programming proficiency means as a master degree or a bachelor degree, we require or a student require or we require to gain the proficiency in programming languages. The languages as the procedural, we can say it's a C, Fortran, the machine learning language, let's say machine-based language is assembly. And we are moving ourselves to the OOPS-based or high-level languages, that is Python, Java, C++, PHP. So many programming languages are in front of us. So through our hands-on projects and the assignments, we can learn how to write clean or the efficient and the maintainable of the code. So we are aware of like how to write the code, how to debug or troubleshoot the software's issues. This programming expertise is very essential for developing our software applications like algorithm and system across different domains. So the next one is our specialized knowledge. Specialized knowledge means we can say in many computer science programs offer various opportunities for our student to specialize the areas such as AI, that is artificial of intelligence, machine learning, cybersecurity, data science, software engineering, and much more. So by focusing on a specific area of interest, we can deepen our experience or expertise to prepare our specialized role in the IT industry or tech industry. Now, the next foundation is our practical experience. So we have a practical experience like it is related to our internships. So we include our internship programs or the capstone projects that provide our student with the real world experiences and in applying their knowledge or the skills. So practical experience is enhance our resume and also prepare the challenges and expectations to the work focus. Now, next fundamental or the foundation is networking opportunities. While we are just discuss about our networking opportunities, our program provide many career fairs like industry events, alumni networks. So building connection with the professional in the field of the job opportunities or network opportunities or the mentorship or the collaboration. So we are connect each other. Now, the next one is like adaptability and the lifelong learning. So in the field of computer science, age is not matter, the experiences matter, programming skills are matter.
So in the field of computer science, we constantly involving with new technologies, tools, and mythologies. So they are emerging regularly. So a strong foundation in computer science, we can say our skill and the mindset to adapt these changes and engage in lifelong learning. So we have a new programming language to exploring the cutting edge technology or staying updated new industry trends. So these are our foundations. Means being an IT person, we have to be more and more aware of all this. So basically, we are like a degree holder or the master degree holder or the certificate holder. These are the foundations of the knowledge, our skills, our experiences. So next is the importance of the computers languages. We know various computer languages are there: procedural based, OOPS based, web based, software development based, app based. So these are the importance of the computer languages. So we can say like the accessibility. So high level languages or OOPS based languages are user friendly languages. We can easily understand the languages because we are compared the low level and the high level. In the context of low level or machine dependent language, we are just discussed about the machine language, that is assembly, some particular softwares we are using, let's say 8085, 8086. And now we are saying like high level languages. So it can easily inspire our programmer to enable a broader range of individual to learn, participate in our software development. Next is our productivity. So productivity means we can build our methods. We can build our functions. So basically data structure, libraries, and the common programming languages tasks are there. So developer productivity is by reducing the amount of code. Reduce the code and need to be emphasized our complex functionality. So that is the advantage of our high level language because they are robust. Robust in the sense like integrated development environment we are using to develop our code. So it provides the features like code implementation, highlighting the syntax, debugging tools are available. So it can enhance our productivity. The next importance for our career is the portability. So high level languages are typically platform independent. We can say we can easily modify the code. So developing is a cross platform application. We can run various operating system and hardwares like hardware architectures, and we can save our time, we can save our effort being a developer. Next point in the high level language process is abstraction. Abstraction mechanism is what? Abstraction mechanism is we allow a developer to hide the complexity and like complex implementation details
and focus on the solving problem. Or we can say it is a higher level of abstraction. So abstraction, simple meaning the code more understandable, more maintainable, more reusable. So as an IT person or a developer, we can encapsulate the functionality into the modular coding or modular component. The next part we are using here, that is community support. Community support means we simply contribute the things as an open source. Number of platforms are nowadays. It is an open source project, like we create our library, can provide the support through forums or the social channel, or we can just make the tutorials and the documentations. So this can, by brain community supports ecosystem facilitate like knowledge sharing, collaboration, innovation, empowering developer to leverage its extreme solution and build upon the work to others. Next, our high feature is the scalability. So scalability means we are just build the software system, and it can be varies the sizes, complexity, or the large scale of enterprise applications. We can say the object-oriented programming, dynamic typing, memory management. So they are the code base to involving requirement and the scale of their project as needed. So industry adaptations are there. So we can say the number of high level languages support us. They are the modern tool to develop our software development, or they provide our accessibility and all. Now, here some new future trend opportunities are there. Let's say AI, blockchain, the quantum computing. So future trend means we are generally discuss about the high level programming languages. They are the emerging technologies. The name is mentioned here, blockchain, IoT. So they are the impact on our career opportunities. So basically they are the importance of our continuous learning, or like taking the adaptability in our field. AI, blockchain, or IoTs, or quantum are the transformative technologies, and they are revolutionizing various industries and reshaping that we interact the technology and the data. So AI, we know, like we develop our process and computer system and performing the task, and typically require the human intelligence or the neural network processing, image recognition, decision making, and problem solving. Now, here are some like opportunities, like machine learning is there, so we can recognize the data pattern, some predictions are there. We can take the advantage of a career option, that is deep learning. It is a subset of ML. So these all are AI application for the industries, including our healthcare to diagnosis, personal treatment, like finance, like fraud detection. If we are taking the career option as a retail, so the recommendation system or inventory management is there. So they are the field of our career we can take. They are like vast career options are there. IoTs is there. Now,
Basically, why we take our career? We want to make our career in our interest. So there are some sectors we can take the highest salary. Let's say the highest salary sectors are accountancy, like entertainment, banking and finance we are using as a career, computers, softwares, and the salary aspects is there. Here is it. Like information technology, insurance, tech, telecommunication, logistics, tour and tourism. So technology, like they are paying our high salary for a software engineer, data science, or the cyber security person. And like finance, we are taking like high paying salary, like professional or like background in the finance or the economic and the business. We can take a role as an investment banker. And next, like I'm talking about the healthcare. Healthcare is again a high career option we are selecting. Let's say, including our physicians, surgeons are there. Like we are taking the concept of law, so legal professionals such as lawyers, judge, we are taking as a career option. Engineering, we are taking our career option. We can take our career option as a consulting. So consulting means we consultate or consulting some companies. So companies can give us high paying job to the professionals, and executive management or information technology. There are higher sectors. So now the last phase here is our question answers phase. So I definitely taking your questions. If you have the question related with your career, please ask me. Yes. Pankaj sir, please allow students to ask their questions, please. Pankaj sir. हाँ मैं कर अच्छा ठीक है sir. Students, you may ask your question after unmute yourself. One by one, you can ask your queries, please. नीता प्रेजेंटेशन को बंद कर दो, स्क्रीन शेयरिंग बंद करो. Anand ji, you can unmute yourself and ask your query, please. Anand ji. Anand Pandit. वैभव सिंह कुछ पूछ रहे हैं. आप सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं वन बाय वन. वैभव आप पूछ लीजिए. फुल वॉइस क्लियर नहीं है. प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. हाँ हिमांशु, आपने अनम्यूट किया है. आनंद पंडित. Good afternoon, ma'am. Yes, please. Ma'am, it is required a personal development for a job. क्या पूछा? Sir, I am asking to ma'am, it is compulsory to develop your personality development in any sector of jobs.
You are saying regarding the personality development? Yes, sir. Yes, sir. Personality development is a part of moral science. And Neeta has taken the webinar for the computer science. Obvious, personality development is most important for any types of the job. If you are interested for personality development, you contact with Ruchi. Ruchi, please share the mobile number. And also email ID, so that a student can mail us what is the requirement. Question from any other? Sir, I have one more question. May I ask? Yeah. Sir, how we can make project to आप प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, ये पूछना चाह रहे हैं? Yes, sir. प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक थॉट होना चाहिए कि हम किस फील्ड. Sir, actually, I want to making a project with जब the आप ये थॉट बना लिए, तब हम आगे बताएंगे कि आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे. क्या? Sir, actually, I thought to making a project on web development plus DSC. अच्छा, नीता बताइए. See, project development, जितनी भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, when you are talking about any of the high level language, you can नीता ही कह रहे हैं वेब डेवलपमेंट. So project is a word. You can go by the web development first, means you have to be make a template. पहले template बनाइए, फिर एक language वो आपकी choice की होगी, उसके साथ connect करेंगे, then you include your database. So through the web development you can easily make your project. आप कहाँ पढ़ते हैं, किस सेंटर में पढ़ते हैं? हिमांशु? Sir, I am studying PCTI Pitampura. PCTI ना, तो यदि आपको यहाँ ना समझ में आए तो 1-to-1 आ जाइएगा और 1-to-1 आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे. Okay, sir. ठीक Thank है? you, sir. Okay, sir. Thank you. गुड आफ्टरनून सर. जी बताइए. सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं. एक है कि जो मैम बता रही थी कि डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स और डेटा एनालिसिस, एक तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस पता करना है कि डेटा एनालिटिक्स में क्या चीज आता है और डेटा साइंस में क्या चीज, डेटा एनालिसिस में क्या चीज आता है, ताकि मैं वो क्लियर कर पाऊं. और दूसरा मेरा ये था कि प्रोजेक्ट मुझे बनाना है. मैं एमसीए का ही स्टूडेंट हूँ और शालीमार बाग जो एसपीडी सेंटर है वहां से मैं बिलोंग करता हूँ. तो प्रोजेक्ट में मेरा डेटा माइनिंग या फिर एआई पे मेरा बनाने का मैंने थीम सोचा है, बट उस पे आगे मुझे आइडिया नहीं मिल पा रहा कि मैं क्या बनाऊं. चॉइस बहुत अच्छी है और तीनों वर्ड बहुत ही आपने बहुत लाइमलाइट से कैच किए हैं. इंडस्ट्री में भी सबसे पहले अगर आप आते हैं, सो डाटा एनालिसिस इज देयर. डेटा एनालिसिस का मतलब है यू आर मेकिंग योर रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. चॉइस इज योर्स. either you go by Python or either you go by R language. Okay. Basically, the company requirement means you have to be highly focused about your report making scenarios. ठीक है, दो तरीके से आप बना सकते हो. ये तो डेटा एनालिसिस का पार्ट हुआ. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेटा साइंस. डेटा साइंस एक वर्ड है. डेटा साइंस इंडस्ट्री जॉब एस्पेक्ट से जो पर्सन है वो बोला जाएगा डेटा साइंटिस्ट, राइट? डेटा कंसल्टेंट.
So that Okay. person is able to control more and more languages. Let's say the person is able to make the scenario in Python, in machine learning, in R language, and in SAS. So if you are a controller having the 4 languages, right, then the person is being treated as a data scientist or the data science, right? And now your accent is data mining. Data Okay. mining or data warehousing is again for the report making for prehistorical data, let's say COVID ka data or the cancer death rate data. So through the software, you can call your data and convert it into the report with the help of graph recognition, right? Okay, ma'am. So where you are putting the concept of AI. तीनों में points clear है? जी मैम. Okay, all right. Thank you, ma'am. You're welcome. मैम तुषार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन उसने मीटिंग ज्वाइन की. आपने जो पूरा होल सेशन किया है उसको एक छोटा सा रिपीटेशन दे दीजिए. तुषार कुमार है कोई. Hi Tushar, are you listening me now? Yes, ma'am. Okay. तुषार, आज का हमारा जो करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट रहा है वो रहा है वेरियस लैंग्वेजेस को लेके. बीइंग अ ग्रेजुएट, बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, हम कौन कौन से करियर ऑप्शन ले सकते हैं, कौन कौन से करियर लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने बहुत सारी लाइंस इंट्रोड्यूस करके बताई. सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि एटलीस्ट वी आर एज अ ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट हमें होना चाहिए. उसके बाद हम बहुत सारे करियर ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, वेब डेवलपमेंट की बात करेंगे, डेटा साइंस एनालिटिकल की बात करेंगे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटीज की बात करेंगे, एआई क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे, एआई एमएल की बात करेंगे, राइट. तो ये बहुत सारे फील्ड्स हैं जो आज की आईटी इंडस्ट्री डिमांड करती है. तो बीइंग अ एक्सपीरियंस पर्सन, बीइंग अ फ्रेशर, राइट, तो हम हर तरीके से अपना करियर ऑप्शन इन लैंग्वेजेस को लेके सेलेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारा कंसेप्ट है. जैसे आप डेटाबेसिस की तरफ जाएंगे, सो फ्रंट एंड बैक एंड के साथ बहुत सारा डेटा आपको या बहुत सारे फील्ड आपको इंडस्ट्री से जोड़ती है, जो कि आपके सोसाइटी के अकॉर्डिंग, करियर के अकॉर्डिंग, हाई लेवल लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग आपको कंसिडर करते हैं, राइट. तो कहीं ना कहीं कोई एक फील्ड में आपका प्रोफिशिएंट होना बहुत जरूरी है. लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग से आना चाहिए. अगर मैं बात करती हूँ वेब डेवलपमेंट की, सो हमें वेब बेस्ड लैंग्वेजेस लेट्स से HTML, CSS, JS, JSON, jQuery ये हमें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए. मीन्स UI और UX डिजाइनर हमें होना चाहिए. हमारे अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि हम एक प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, एक रॉ प्रोजेक्ट डेवलप कर सके, डेटा को इजीली ट्रांसफॉर्मेशन पे ले जा सके, जो कि आज की इंडस्ट्री डिमांड करती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेबसाइट डेवलपमेंट. अगर हम टेम्पलेट बनाना अच्छे से जानते हैं तो पूरा स्केच बना देंगे. अगर हम ओवर टिपिंग में चले गए या वेब डेवलपमेंट में चले गए तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे. रजिस्ट्रेशन, फीडबैक ये सब करते हैं, हम इनसे जोड़ देंगे. अगर हमें नेटवर्किंग में इंटरेस्ट अच्छा सा आता है तो हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की तरह चले जाते हैं, डेवऑप्स की तरफ चले जाते हैं. अगर हमें एआई के साथ इंटीग्रेट करना है हमें अपने आप को, तो हम लैंग्वेजेस से जुड़ते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया, आर हो गया, एमएल हो गया, एआई के साथ आप जुड़ते हो तो ठीक है. तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो आप लेते हो, ठीक है. बट स्टिल हमें एक ग्रेजुएशन और एक पोस्ट ग्रेजुएशन तो लेनी है, और उसके बाद आईटी में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. आप बहुत अच्छी तरह डीबग कर सके, आप बहुत अच्छी तरह कोडिंग पे जा सके, जिसकी बेसिस पे हमें बहुत हाई सैलरी इंडस्ट्री पे करती है. इज इट ओके? Yes, ma'am. तुषार Yes, ma'am. मैं
मैम नेक्स्ट कोई नवीन है, वो बोल रहे हैं डिस्कस अबाउट ऊप्स। डिस्कस अबाउट oops. ये क्वेश्चन किनका है? प्लीज अनम्यूट ऑफ योरसेल्फ बच्चा। नवीन सेठिया। Okay. नवीन, like oops is what? oops आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। oops was started at the time of 1980s, जब हम C++ या मिडिल लेवल लैंग्वेज पे आ गए थे। ठीक है, तो वो हमारी oops के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब उन्हें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस पे, क्योंकि oops बेस्ड है सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसमें आपकी C++ आ गई, जावा आ गई, डॉट नेट आ गई, पाइथन आ गई, एंड्रॉइड आ गई। ये सारी लैंग्वेजेस आपकी oops बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आप क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, है ना, इंटरफेस, ये सारे कीवर्ड के बेसिस पे प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलप करते हो। बहुत अच्छी एनहांसमेंट हो जाए तो इन्हीं को बेस बना के आप वेब डेवलपमेंट करते हेलो मैम। हो। इज इट क्लियर? मैम यस प्लीज। मैम मुझे एक क्वेश्चन था कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब हम जॉब के लिए जॉब ढूंढने जाएंगे, इंटरव्यू के टाइम हमें सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी या बिना सर्टिफिकेट के चीजें सही रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है। यस मैम। उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट करते हो, वो एक एड ऑन हो गया आपका, एक एड ऑन प्रॉपर्टी हो गई आपकी, जो आपको भीड़ से अलग कर लेती है। सो कंपनीज थिंक अबाउट कि इंटर्नशिप पे भी ना लेके डायरेक्टली ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा स्किल में कमी लगता है तो हम इंटर्नशिप से आ जाते हैं। अगर आप करोगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी एंड योर प्रोफाइल। यू कैन segregate yourself among many persons. Someone Okay. Good asking for afternoon, ma'am. C and C++, madam. दृष्टि उपाध्याय। यस दृष्टि, अनम्यूट करेंगे बच्चा आप? Hello, ma'am. Good afternoon. या Yeah, can you please define me C language and C++? so basically you are having a question like what is the difference between C and C++? Yes, ma'am. Because now I am second semester, so my subject is programming language and C++ language. So नीता दृष्टि के जवाब देने से पहले वैभव आप कुछ अटपटा सा आंसर्स लिखते जा रहे हो इस चैट बॉक्स में। You are free to write, but not free to write anything. नीता आप दृष्टि का जवाब दे दो आप। यस दृष्टि बच्चा, हम लोग सबसे पहले सी की बात करते हैं, राइट? सी इज व्हाट? सी इज अ लैंग्वेज, लेकिन कैसी लैंग्वेज है? प्रोसीजरल लैंग्वेज है। और कब डेवलप हुई थी? 70s के टाइम में हुई थी। स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं, बट उसको ना दूसरी सी प्रोग्राम के साथ, डिफरेंट प्रोग्राम के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसमें स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं C++ की। अपने आप में बहुत विशाल नाम है ये। C++ कहता है कि मेरे पास oops के फीचर्स हैं, और जहां पर भी फीचर्स आ जाते हैं वहां पर भी एक्सटेंसिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, कस्टमाइजेशन बढ़ जाता है बच्चा। तो oops का मतलब है उसके पास क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं। सो C is a procedural language and C++ based on oops language, right? And there is a 10 years difference. 70s और 82 का टाइम आ गया है बेटा। So C is procedural and C++ is based on oops. Is it clear? Yes, ma'am. Thank you so much. नीता किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था जी कि हम बीसीए के बाद क्या जॉब करें या एमसीए हायर एजुकेशन करें, तो हमारा आंसर इसमें यह है कि बीसीए के बाद जॉब करो
जॉब की एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मास्टर डिग्री। और जॉब 1 साल या 2 साल करने के बाद फिर मास्टर स्टार्ट करो, क्योंकि आज जितने रेगुलर यूनिवर्सिटी के बीसीए स्टूडेंट हैं वो सारे जॉब करते हुए एमसीए कर रहे हैं इग्नू से ही। तो हमारा सजेशन ये है कि जॉब, क्योंकि आप जब तक कहीं रेगुलर से करोगे, उ- उतने दिन में 2 साल का एक्सपीरियंस लेके यदि डिस्टेंस से करोगे तो आप उनसे हमेशा सुपीरियर रहोगे जॉब में। ये क्वेश्चन में छूट सर ने किसी का क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या पढ़ें, तो आप आ जाओ यहाँ, एक्सपर्ट से हम मिला देते हैं आपको, और फिर एक्सपर्ट आपको बता देगा कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, I am Faiza Siddiqui, कैन वेब डेवलपमेंट student of SPD Shalimar Bagh, BCA second semester. आफ्टर मैम क्या हमें भी कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा अभी? बच्चा, एज पर द बीसीए गाइडलाइंस, बीसीए 5 में आपको साइनॉप्सिस बनाना है और बीसीए 6 में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है बेस्ड ऑन हाई लेवल लैंग्वेज। चॉइस आपकी होगी। गाइडलाइंस इग्नू के BCSP 064 में गिवन है, उसके बेसिस पे पहले सिनॉप्सिस फिर रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूर है। ओके मैम, एक और क्वेश्चन था मेरा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है? क्वांटम कंप्यूटिंग में मैंने बहुत छोटी सी इमेज लगाई है। आज के टाइम पे ना मोर ओवर काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वांटम कंप्यूटिंग का टाइम आ जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिजिटल प्रोसेस के साथ ही स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग इज द एंड प्रोसेस। हम उसके साथ बहुत सारे मीन्स लाइक मैनेजमेंट की बात करेंगे, जैसे डिवाइस कंट्रोलिंग, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, ये सब हेल्थ डिवाइसेस, मॉनिटरिंग, ये सब रिमोटली जब आप काम करते हो तो क्वांटम कंप्यूटिंग का प्रोसेस होता है बेटा। यस, एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू मैम। यू वेलकम। हेलो, यस प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग वेब, जैसे मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम मैंने कई लोगों से ये सुना है कि वेब डेवलपमेंट एआई के जरिए रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो और क्या मुझे ये करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? और इसमें कितना टाइम तक सैचुरेशन आ जाएगा? मतलब एक ये टर्म आता है कि लोग इसमें बहुत सारे घुस रहे हैं, मतलब जॉब ग्रैब कर रहे हैं। तो इसका मैम जवाब दे। देखो, ये बिल्कुल ना अनप्रिडिक्टिव सी बात है। कोविड आ गया था, पैंडेमिक आ गया था, उसके बाद भी चीजें चलती रही और चलती रहेंगी। कई चीजें क्लोजअप पे आ गई, बिल्कुल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन एक आईटी ऐसा सेक्टर था जो तब भी स्टैंड करता था और आज भी स्टैंड करता है। सो वेब डेवलपमेंट इज अ वास्ट एरिया। एआई के टूल्स उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, एआई उसकी एडेप्टेबिलिटी को और इंक्रीज कर देगा। एक वेबसाइट जो हम पहले लैपटॉप या टैबलेट पे ओपन करते थे, आज उसकी एप्स डेवलप हो गई हैं, है ना। तो किसी भी नई कंसेप्ट का या नए प्रोसेस के आने का मतलब है और एनहांसमेंट और इंटीग्रेशन। हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि रिप्लेस कर देगा। दैट इज टोटली अनसर्टेनिटी वाली बात है, ठीक है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कंप्लीट योर कोर्स। ओके, थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम, इज देयर एनी गवर्नमेंट जॉब आफ्टर BCA? you have to be check the government portal. If you are a bachelor, you have a right to search the field. If you are able to satisfy the norms, the government norms, then definitely you can. ओके मैम, थैंक यू। You're welcome. Ma'am, I have a question, ma'am. Your name, please. Himanshu, ma'am. Yes, please, Himanshu. बैकएंड के लिए क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, स्टूडेंट पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन है,
Vaibhav, Vaibhav, please don't message in the comment box. आप बिल्कुल कोई भी मैसेज करने के लिए अथॉरिटी नहीं है आपके पास. आपको अगर कुछ नहीं पूछना है, so you can leave the meeting. Otherwise, मैं आपको खुद मीटिंग से बाहर निकाल दूंगी. मैम may I ask a question? हाँ हिमांशु, आप पूछ सकते हो. Ma'am, what is the difference between product based and service based company, and what these companies demand, what the requirement of the company for the See, employer? बहुत छोटी सी बात है, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर है बच्चा. प्रोडक्ट बेस्ड मीन्स ब्रांडेड और ऑथोराइज्ड कंपनी. Number of branded companies are there, right? And your service based means the third party tool we are using to customize the thing, that is service based. ठीक है, जो हमें फैसिलिटी देगा वो सर्विस प्रोवाइडर है, और जो हम मेन कंपनी में वर्कआउट कर रहे हैं, एक प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है. Ma'am, is any different requirement for these companies? रिक्वायरमेंट तो सबकी अलग होती है, दैट इज द चॉइस, पर्सन टू पर्सन चॉइस. If we are capable, definitely we are moving to the product based companies, right? And the third party tool like freelancers, third supporters are there. If we join that kind of thing, तो धीरे धीरे हमें नेटवर्क बढ़ाना होगा. ठीक है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का ज्यादा स्कोप होता है rather than services based company. गुड इवनिंग मैडम, एक मेरी क्वेरी है. मैम आशु के बाद है ना, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं व्हाट इज HTML5. और तुषार, यस यू कैन connect with us at PCTI. You can contact in any one of the counselor. This is Ruchi. I'm a team leader of the counseling section. My two counselors are available, Miss Pushpa and Uma madam. You can come between the 9 to 6. ठीक है, for any query. I have also shared my contact number and email ID. आप उस पे भी मुझसे बात कर सकते हैं. No worries. मैम आशु की क्वेरी के बाद आनंद पूछ रहे हैं HTML5, तो आप वो बता दीजिएगा. एक्सक्यूज मी मैम, आई Yes, वांट टू आस्क कि लीव कर सकते हैं क्या मीटिंग? yes, if you want, you can. If you haven't any query, you can leave the meeting. मैम मेरी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं. Okay, all right, you can. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. Welcome. गुड इवनिंग मैम. Very good evening. I have a student like Ashu. Please, Ashu, अपना question पूछिए. Hello. Ma'am, I have a query. Yes, please. मैम आफ्टर BCA हम डायरेक्ट पहले इंटर्नशिप करेंगे, हमें डायरेक्ट जॉब वगैरह मिल सकती है कुछ, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ भी. BCA में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. कोशिश करिए BCA के साथ आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में से एक लिस्ट बनाइए. 2-4 आप OS का पकड़िए, 2-4 DBMS का टॉपिक लीजिए, है ना. ये सब करने के बाद कहीं एक छोटा सा स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लीजिए. वो चाहे आपका नेटवर्किंग का हो, चाहे वो बैकएंड का हो, चाहे वो आपका फ्रंट एंड का हो, तो आप BCA के बाद भी अच्छी जॉब ले सकते हैं. एंड द मेजर थिंग इज, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो हर कंपनी आप जैसे एम्प्लॉय को, चाहे वो फ्रेशर ही हो, उन्हें लेना चाहेंगे. ठीक है, सो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड द नॉलेज, एवरीथिंग. अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन है HTML5 को लेके. HTML4 ना बहुत ज्यादा लिमिटेड है, लाइक उसमें हम लोग प्री डिफाइंड टैग पे काम करते हैं. HTML5 और XML हमें पोटेंशियल देता है कि हम 2D 3D एनिमेशन काइंड ऑफ टैग यूज कर सकते हैं और एनहांसमेंट के साथ कर सकते हैं. तो ये जो कैनवस टैग हो गया और ये जो थोड़े लेटेस्ट टैग हो गए, वो आपके HTML5 के टैग्स हैं.
जिनसे डेवलपमेंट आपका इजी गोइंग हो जाता है और केस सेंसिटिव का प्रोसेस हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन है आशु का। आशु, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मैडम कंसर्न ये है कि जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है और बैकएंड वेब डेवलपमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है और किसको प्रेफर करना चाहिए? फुल स्टैक डेवलपमेंट और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। हाँ जी, फुल स्टैक वेब डेवलपर और बैकएंड वेब डेवलपमेंट। देखो, अगर हम डेवलपमेंट में आते हैं तो हमें स्टार्ट यानी कि टेम्पलेट बनाना अच्छे से आना चाहिए। HTML, CSS, JSON, jQuery, बूटस्ट्रैप, ये हमें बहुत अच्छी तरह कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी हम साइट डेवलप कर रहे हैं वो सर्वर साइट है या क्लाइंट साइट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैकएंड की। बैकएंड का मतलब होता है कि हमें पूरी साइट को हैंडल करना आसानी से आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड में कौन सा टूल यूज हुआ, कोई एक्सेप्शन आ रही है तो हम उसे कैसे इंटीग्रेट कर ले, एनालाइज कर ले, और डीबी के साथ कितने लेवल का राइट हम अपनी क्वेरी को यानी कि यूजर्स को दे, कितना एडमिन के पास रखें। सो दे आर द कंट्रोल ऑफ बैकएंड। आई होप आशु योर आंसर इज देयर क्लियर। यस मैम, थैंक यू। वेलकम मैम जी। मैम अगर हमें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो मैम क्या प्रोसीजर होता है कुछ? बेटे, उसके लिए आप एक बार विजिट करिए, PCTI आइए, तो आपकी क्वेरी जैसी होगी हम लोग वहां पे आपके साथ डिस्कशन वैसा कर लेंगे। ओके पॉसिबल प्लीज मीट PCTI with Ruchi ma'am, or please visit one time. All the counselor team is available for your queries here. ओके मैम, थैंक यू मैम। Thank you. मैम may I ask a question? Himanshu, Yes मैम। yes Himanshu, बोलो। मैम एक्चुअली मैम मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो नॉर्मली HR जो है वो 70% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो HR हैं उनको, जो बहुत सारे बच्चे हैं कुछ ट्यूटोरियल देख के कर लेते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो सेम ही वही प्रोसेस चल रहा है। तो मुझे किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए जिससे मैं HR के एक नज़र में अवॉइड कर सकूं, मतलब HR को लगे कि नहीं ये करके आया है कुछ। हिमांशु, मैंने 2 वर्ड बहुत स्टार्टिंग में बोले हैं बच्चा। हमें ना पहले तो अपनी नॉलेज, ठीक है, हमें अपनी नॉलेज पे कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ट्यूटोरियल्स अवेलेबल होते हैं हमारे नॉलेज को एनहांस करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि कोई कोड मिल गया हमने वहां से ले लिया और हमने बोल दिया कि वी आर कोडर, वी आर डेवलपर। दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। हमें अपने लेवल से अपने एल्गोरिदम को देखते हुए किसी प्रॉब्लम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जब HR ये देखेंगे कि ये वाला जो लॉजिक है और एल्गोरिदम है स्टूडेंट ने अपने बेसिस पे डाला है और आप उसे वेल एक्सप्लेन कर चुके हो, चाहे वो 2 लाइन हो या 200 लाइन हो, आपको मालूम है कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है, आपको उसका अप्रोच, उसका स्ट्रैटेजी मालूम है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को जॉब प्रोफाइल पे ले जा सकते हो। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं ट्यूटोरियल देखूं, डॉक्यूमेंटेशन देखूं, तो मैं कितने दिनों तक IT इंडस्ट्री में सरवाइव कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे बड़ा कंसेप्ट है बेटा नॉलेज और आपका क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये फेजेस आपको क्लियर होने चाहिए। तो एक नहीं, आप 10 प्रोजेक्ट HR को मिनट में बना के दिखा दोगे। सो द बेसिक कंसेप्ट इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू एल्गोरिदम, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। Hello. ओके मैम। यस। Okay, good evening, ma'am. I'm Namrata from PCTI, Pitampura branch. Ma'am, I have a question for which language is best for the future salary package, like Laravel या फिर C Sharp? That is a controversy Okay. of the question. I'm And asking just which is best for the students. see, everyone having their own perceptions and thoughts. किसी Okay. को स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पसंद है, Yeah. किसी को लाइट वेटेड लैंग्वेज पसंद है, किसी को लगता है कि 50% मैं करूं, 50% टूल्स कर दें।
है ना बेटा? तो मैं यहाँ किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं करूंगी, बट स्टिल आई एम आस्किंग यू हैव टू बी फाइंड आउट योर करियर इन हाई सिक्योर लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, आप ओरेकल के प्रोडक्ट्स की बात करो, सो दे आर मोर एंड मोर सिक्योर। ठीक है, मेरे को यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज का नाम Okay, नहीं देना है, बिकॉज no मेरे issue. लिए सारी लैंग्वेजेस बराबर है। Okay, ma'am, no issue. Thank you. यू वेलकम। So if we don't have any question, Ruchi ma'am, shall we wind up our session? Pooja, may I doing BCA fifth? How can we do best preparation? Many backlogs. Pooja, you can contact us for the same. आप लोग आपकी कोई क्लास अगर पीछे रह गई है या कुछ है तो उसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे, बट आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। What problem I faced? I graduate with literary degree, but I did PhD. एक स्टूडेंट है सोना। सोना, you can unmute yourself and ask your questions to सोना। सोना सोना आप हो इधर? मैम एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं 1 2 3 4 5 से इनका यूजर है, कैन वी बिकम अ टीचर आफ्टर PGDCA? यस, आप बन सकते हो, बट जो स्कूल्स का एक लेवल होता है, लाइक वो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स आपको कैसे ले रहे हैं। बाकी 8 to 12th क्लास तक के आप आराम से बन सकते हो। आई होप 10 तक के तो बहुत आराम से टीचर बन सकते हो। ठीक है, दिवांशु क्या पूछना है आपको? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं अभी पाइथन सीख रहा हूँ, मतलब हमारे कोर्स में भी है तो मैं सीख भी रहा हूँ। तो मैंने अभी उसमें एक चीज मैंने देखी है कि डेटाबेस हैंडल करने के लिए हम एक टेक्स्ट फाइल को भी यूज करते हैं। तो बेटर टू यूज डेटाबेसेस और अ टेक्स्ट फाइल फॉर डेटा हैंडलिंग यूजिंग पाइथन। Python having a much more scope, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किस लेवल के प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो। पाइथन के अंदर वो यूटिलिटी है कि आप नॉर्मल टेक्स्ट को CSV में कन्वर्ट करके आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। पाइथन के अंदर वो पांडास का कंसेप्ट ऐसा है कि आप डिक्शनरी को लेके 2 SQL यूज करके डेटा को कैप्चर कर सकते हो। पर आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप किस लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट का थीम क्या है, ग्राफिकल बेस्ड है, डेटाबेस बेस्ड है या लाइब्रेरी बेस्ड है, उसके बेसिस पे आप ये काम कर सकते हो। पाइथन तो आपको सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, numpy का दे रहा है, मैटप्लॉट का दे रहा है, पाइप्लॉट दे रहा है, pandas दे रहा है, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द डिमांड ऑफ योर प्रोजेक्ट फर्स्ट। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। यस, एक लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है मैम, किसी का, मैम का माइक नहीं चल रहा है, सोना का। वो कह रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम, व्हाट प्रॉब्लम्स कुड आई फेस इन दी टीच एज I graduated with a literature degree, but I did PGD MCA side by side and course related to CS, and now I am pursuing MCA from IGNOU. कर सकती है कि नहीं कर सकती है? If she doing is another course? yes you can. So everyone having the potential to shake the mountain. पहली बात तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आपने लिखा ही है जैसे कि आपके पास PGD MC आप साइड बाय साइड कर रहे हो, तो कहीं ना किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लीजिए और थोड़ा सा उसके ऊपर ना कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस माने कि मेरे सामने ये क्वेरी है, मैं ये डेवलप कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप बहुत आराम से टीचिंग जॉब में आ सकते हो। टीचिंग हो या IT इंडस्ट्री की जॉब हो, एनी प्लेस, एवरीवेयर, योर क्वालिफिकेशन प्लस योर एक्सपीरियंस ऑफ योर लैंग्वेजेस इज मैटर। अगर आपके पास प्रोफिशिएंसी है तो आप डेफिनेटली कहीं भी प्लेस अप हो सकते हैं। ओके मैम, और तो कुछ नहीं है। लास्ट में आनंद लिख रहे हैं बग बाउंटी, हाउ टू लर्न बग बाउंटी।
So when you visit to PCTI, definitely we'll provide you the answer. दिलीप जी, आपको कांटेक्ट करना रहेगा, तो मैं आप सबको अपना चैट बॉक्स पे ईमेल आईडी लिख रही हूँ। आप लोग मुझे अपना क्वेरीज मेल कर सकते हैं, तो हम आपको उस पे पूरे आंसर्स कर देंगे। आपको कोई भी सिलेबस या कुछ भी डिटेल्स चाहिए रहेगा, आप इस पे मुझे मेल करिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। विशाल, आप भी अपना क्वेरी इस पे मुझे मेल कर सकते हैं, वी विल आंसर यू बैक। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, मैं दोबारा से डाल रही हूँ। आप चाहें तो हम लोगों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये 2 नंबर्स हैं, इस नंबर पे आप कर दीजिएगा। हेलो, यस मेरी आवाज विशाल। आ रही है? हाँ, मैम मेरा ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, जो मैं ये कैसे अपने में इंटरेस्ट पहचानूंगा, जो मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट में जाना है या ये कोडिंग यस, में जाना है, तो उसके लिए विशाल एक बार आप सेंटर पे विजिट कर लो, और थ्रू फेस टू फेस काउंसलिंग इज मच मच बेटर कि आप ऑनलाइन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में हम कई बार डिस्कशन करते हैं तो कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं, कुछ आपके पॉइंट्स हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं। तो आप 9 to 6 के बीच में वीकडेज पे कभी भी विजिट कर लीजिए, काउंसलर्स आर अवेलेबल। मैम क्लास कब से स्टार्ट हो, सेकेंड सेमेस्टर यस की? सोना, अगर आप पाइथन पे काम कर रही हैं कहीं पर, तो आप बिल्कुल सही कर रही हैं। आप पाइथन में अपनी नॉलेज और बढ़ाना चाहती हैं, तो आप उसके साथ और भी कुछ लैंग्वेजेस यूज कर सकती हैं। आप उसके लिए अगर आपको डिस्कशन करना है तो आप आके हमसे मिल लीजिए, हम अपने ट्रेनर्स के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको और ज्यादा आईटी फील्ड्स के बारे में बता देंगे। आप पाइथन कर रही हैं, इट्स रियली वेरी गुड। मैम हम आपको सेंटर इग्नू वाले सेंटर पे कांटेक्ट करें या हाँ, आपका कोई पीसीटीआई, सेंटर पीसी है? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, पीसीटीआई में। ओके मैम, तो यस आनंद ये जी, मैं इग्नू में प्लेसमेंट होता है, मैदानगढ़ी जो हमारा इग्नू का मेन ऑफिस है, वो लोग भी प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं, और उनके साथ मिलकर हम लोग भी प्लेसमेंट ड्राइव कराते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन आपको आपके व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू, इग्नू की वेबसाइट के थ्रू हर तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है जब ड्राइव्स होती हैं। तो डेफिनेटली आप कोई ड्राइव होगी तो वी विल इन्फॉर्म यू। यस हिमांशु, इंटर्नशिप फॉर वेब डेवलपमेंट आपको मिल सकता है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम लोग पहले आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, वो हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे, और हम आपको प्लेसमेंट भी डेफिनेटली, इंटर्नशिप के साथ प्लेसमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। some diploma courses after BCA or with BCA, yes you can come PCTI। मेरे सारे सवालों का जवाब यही है कि आप PCTI पे विजिट कीजिए। सर्टिफिकेट कोर्सेज, BCA के साथ कुछ डिग्री कोर्सेज, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज, आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी। internship in cyber security, yes, but you need to attend PCTI face to face counseling, उसके बाद ही हम आपको internship और placement के बारे में कुछ बता पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आपसे मिलना बहुत जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, आपके बारे में आपकी नॉलेज चेक करना जरूरी है। ठीक है, मेरा एक पेड इंटर्नशिप, यस, सम कंपनीज आपको जो है पे करती है इंटर्नशिप के लिए, और कुछ कंपनीज होती हैं जो आपको सर्टिफिकेट भी देती है उसके लिए। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के क्या रूल्स हैं, क्या है, उसके लिए फिर हम आपको मिलकर ही बताएंगे। कैन आई बी प्लेस्ड इन इग्नू? इग्नू में प्लेस्ड होने के लिए आप इग्नू में कांटेक्ट कीजिए। मैम बीसीए इज ऑल्सो, यस बीसीए इज अ डिग्री प्रोग्राम, इग्नू इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, और ये डिग्री कोर्स है, डिस्टेंस एजुकेशन है, इससे आप अच्छी जगह पे प्लेसमेंट ले सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से पढ़िए वेबसाइट पे, इट्स अ बेटर यूनिवर्सिटी, गुड यूनिवर्सिटी। मैम क्लास भी चल रही है क्या अभी? हाँ जी सेकेंड विशाल जी, सेमेस्टर मैम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास भी चल रही है? अभी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसे स्टार्ट होंगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पहुंच जाएगी। मैम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? इस मंथ के एंड तक या मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। क्लासेस के बारे में मत पूछिए, क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन थ्रू मैसेज और मेल मिल जाएगी।
वेयर इज द सेंटर ऑफ पीसीटीआई? सेंटर इज पीतमपुरा में है, मैं एड्रेस डाल रही हूँ यहाँ पर। पीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एपी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पर आपको मिस रुचि, उमा मैडम और पुष्पा मैम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। असाइनमेंट्स के बारे में सब इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इंटर्नशिप वगैरह के लिए आप सब लोग यहाँ पर आके, हमारे प्लेसमेंट टीम है, आप उनके साथ आके मिलिए, बात कीजिए। जो भी वो फॉर्मेलिटीज बताएंगे करने के लिए, आप वो सब कीजिए। Excuse me, ma'am. कैन वी गेट इंटर्नशिप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? नो, मिल सकता है, रिकमेंडेशन तो मिल सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। आप किस ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, क्या फॉर्मेट है क्या नहीं, वो सारी चीजें डिपेंड करता है कंपनी की, कंपनी अपने लेटर पे क्या आपको लिख कर दे सकती है। ठीक है, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय ईमेल एड्रेस, माय कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड। अभी किसी का कुछ क्वेरी रहेगा आप आ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस की वीडियो है क्या? आशु जी, आपकी इस क्वेश्चन के लिए आप आइए, मिलिए एक बारी पीसीटीआई आके। आप रोज आ सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप पीसीटीआई लैब में आइए, अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई मना नहीं करे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसको बंद करते हैं, और किसी का कुछ क्वेरी रहेगा आप लोग मेल कर दीजिएगा, इट्स बेटर, आपको डेफिनेटली आंसर